Hello students, this is our first unit and we are going to discuss few numericals. In our last video, the last topic discussed by us was combination of errors, where we had discussed different cases for calculating the maximum errors. यानी हमने maximum errors को calculate करने के लिए different केस डिस्कस किए थे कॉम्बिनेशन में सम ऑफ क्वांटिटीज, डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो हियर इज ए न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दैट कॉन्सेप्ट. द न्यूमेरिकल इज द percentage errors in the measurement of mass and speed. Means percentage error in mass is 2% and percentage error in speed is 3. These are our given particulars. How much will be the maximum error in the estimate of kinetic energy? हमें kinetic energy में maximum error find out करनी है obtained by measuring mass and speed. So first write this percentage error. If mass is denoted by m, so percentage error will be denoted by delta m upon m into 100. That is 2%. And delta v upon v into 100, that is 3%. Now we have to find the error in the estimate of kinetic energy. So since kinetic energy is k is equal to half mv square. This is the formula of kinetic energy and we have to find the maximum error. So for maximum percentage error in estimation of k, that will be delta k upon k into 100. So what it will be, क्या होगा कि जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उन सब में परसेंटेज एरर के सम के इक्वल होगा. इट मीन्स डेल्टा m अपॉन m into 100. And what will happen to the power comes as the first term twice into delta v upon v into 100. This will be the formula. Just put the values of this. This is 2% and plus this is 2 into 3. So answer is 8%. So this is the maximum kinetic maximum error in the estimation of kinetic energy. Okay. This is our next question. The period of oscillation of a simple pendulum is this. Simple pendulum का period of oscillation ये given है आपको. That is t is equal to 2 pi under L upon G. Measured value of L is 20 centimeter. It means L is 20 centimeter. Known to 1 millimeter accuracy, it is delta L, 1 millimeter. Up this is in centimeter and this is in millimeter. We have to convert in one single unit. Either we have to convert this into millimeter or this into centimeter. And time for 100 oscillation is found to be 90 seconds. It means time is 90 seconds. Using a wristwatch of 1 second, it means delta t will be 1 second. So what is the accuracy in determination of G? G के डिटर्मिनेशन में एक्यूरेसी हमें फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट आई विल राइट डेल्टा एल इंटू सेंटीमीटर 0.1 बिकॉज 1 millimeter is equal to 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Okay. 1 millimeter is equal to 1 upon 10 centimeter. So
So we have to find the accuracy in determination of G, but here this formula indicates, this formula will find accuracy in determination of T. So first we have to find the value of G from this formula. So for this, let's squaring both sides, it will become T square is equal to 4 pi square L upon G. Now the value of G will be 4 pi square L upon T square. Now the maximum accuracy, maximum percentage error in determination of G. It will be delta Z upon Z into 100. 4 pi square is a constant. Okay, so it will be delta L upon L into 100 plus the power twice of delta T upon T into 100. Just put the value of T, delta T, L and delta L. Delta L 0.1, L 20 into 100 plus twice into delta T 1 and T 90 into 100. So just solve these particular things. This will be 0. We can solve 25 or this 100 will be used for percentage sign. So it will be 0.1 upon 200 percentage plus 2 upon 90 percent. Just solve these. This is 0.5% plus this is 2 upon 90. So 2.22%. So the answer is 2.572%. Okay. So 2.72% is the error in determination of G. Delta G upon G into 100. It will be 2.72%. This is the question. Find the relative error in Z. Z में हमें relative error find out करनी है और Z की value ये given है. There is a minor difference between relative error and percentage error. So first let's calculate the relative error. Z is given a की power 4, b की power 1/3, c and d की power 3/2. So relative error in Z. There is a simple formula. It will write delta Z upon Z and the power comes as the first term, 4 into delta A upon A plus 1/3 into delta B upon B plus delta C upon C plus 3/2 delta D upon D. हमने पहले ही पढ़ लिया है कि चाहे सम हो या प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, सब में जो पावर जो मैक्सिमम एरर होगी जेड में वो इंडिविजुअल क्वांटिटी में एरर का सम होगी. ठीक है, और जो पावर होगी वो सब के सब क्या हो जाएगी, सामने आ जाएगी.
So this is the relative error in Z. Now percentage error in Z, delta Z upon Z into 100, 4 into delta A upon A into 100 plus 1 by 3 delta B upon B into 100 plus delta C upon C into 100 plus 3 by 2 delta D upon D into 100. This is the percentage error in Z. If the values of if the error in the measurement of A, B, C and D are given, then we can find the error in the measurement of Z. Let's discuss one numerical given in your NCERT exercise. This is our next question, question number 2.13 of your NCERT exercise. A physical quantity P is related to 4 observations A, B, C and D as follows. यानी कोई क्वांटिटी P है वो 4 क्वांटिटी से मेजर्ड की गई है और वो इस तरीके से रिलेशन से गिवन है. That is P is equal to A cube B square upon under root C and D. Okay. The percentage error in the measurements of A, B, C and D are. It means delta A upon A into 100 is equal to 1%. Delta B upon B into 100 is equal to 3%. Delta C upon C into 100 is equal to 4%. And delta D upon D into 100 is equal to 2%. Okay. The percentage errors in the measurement of A, B, C and D are 1, 3, 4 and 2% respectively. Now the first question is, what is the percentage error in P? So the percentage error in P will be delta P upon P into 100. What it will be? The power comes as the first term into this. So this will be 3 into delta A upon A into 100 plus 2 into delta B upon B into 100 plus this is power 1 by 2. 1 by 2 into delta C upon C into 100 and this is 1. So delta D upon D into 100. Put all the values. This is 1, 3 into 1% plus 2 into 3% plus 1 by 2 into 4% and plus 2%. Okay, this is 3 plus 6 plus 2 and plus 2. The total is 3 plus 6 9 plus 2 11 and plus 2 13. The total error is in the measurement of P is 13%. Now the second question is, if the value of P calculated using the above relation turns out to be this, यानी अगर P की वैल्यू इस रिलेशन को यूज करके कितनी आती है 3.763, तो टू व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ द रिजल्ट, हमें इसकी कितनी वैल्यू तक इसे राउंड ऑफ करना चाहिए. ओके, सो अब इसका डिसीजन कैसे होगा? इसका डिसीजन होगा यहाँ से. दिस इज द परसेंटेज एरर. इट मींस दिस इज 0.13. देन हाउ मेनी significant digits are there? Significant digits 2. There are only 2 significant digits, 1 and 3. So this result should be round off to 2 significant digits. It means the total significant digits should be 2. Means the accurate value of P, it will be 3.763. अब हमें 2 डिजिट का राउंड ऑफ करना है, यानी अब इसमें 4 डिजिट है, अब वी हैव टू राइट ओनली 2 डिजिट्स, तो वी हैव टू एलिमिनेट दीस 2. दिस इज द 3 को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज इट इज लेस देन 5. सो दिस इज 3.76 एंड फाइनली इट विल बी 3.8 बिकॉज व्हेन वी राउंड ऑफ 6 इट इज ग्रेटर देन 5 and the preceding digit is an odd number, so the preceding digit will be increased by 1. पिछला डिजिट अगर odd number होगा तो
कितना हो जाएगा वो 8 आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये आपने रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ में आपको पढ़ाया गया था और सिग्निफिकेंट डिजिट्स की डेफिनेशन की इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। जस्ट सिंपली कैलकुलेट द परसेंटेज एरर बाय दिस फॉर्मूला। Just simple add all the individual errors by writing the powers as the first term। क्लियर, फिर उसके बाद इसको हम ऐसे प्रोसीड कर लेंगे। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.14 of your NCERT exercise। A book with many printing errors contain 4 different formulas। एक बुक है जिसमें बहुत सारी प्रिंटिंग एरर है, उसमें 4 डिफरेंट फॉर्मूलेस दिए गए। फॉर द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग सर्टेन पीरियोडिक मोशन। एक पार्टिकल है जो सर्टेन पीरियोडिक मोशन में जा रहा है। ओके, ये आपको 4 फॉर्मूलेस गिवन है। y इज इक्वल टू दिस एंड दिस, वेयर a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, v स्पीड है, t टाइम पीरियड है। हमें गलत फॉर्मूला बताना है किसकी बेस पर, डायमेंशनल बेसिस। आपको याद होगा डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन था, चेक आउट द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यानी डायमेंशनली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है या नहीं है। उसमें क्या करते थे, एक फिजिकल इक्वेशन है, एलएचएस की डायमेंशन और आरएचएस की डायमेंशन इक्वल है तो वो फिजिकली करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे। द फर्स्ट वन इज y इज इक्वल टू a sin 2 pi t अपॉन t। ओके, y डिस्प्लेसमेंट LHS, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू L, बिकॉज डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट it means L, and the second one is dimension of RHS। RHS means क्या, A, it means what is the A, displacement, dimension of displacement। It is also again L। Here is another term, this is angle, because angle is a dimensionless quantity। Since angle is dimensionless, okay, so dimension of LHS is equal to dimension of RHS, therefore this formula is dimensionally correct। Okay, let's check out another example। This is y is equal to a sin vt। Okay, dimension of LHS is always L, and in right side it is a sin vt। So dimension of RHS, it is dimension of A into dimension of VT। A की डायमेंशन और VT की डायमेंशन। Dimension of A is L, but dimension of VT, V is the velocity, speed, dimension of speed is LT minus 1 into T, so it is L into L, but since angle is dimensionless quantity, this is a dimensionless, और यहाँ पे एंगल की डायमेंशन क्या आ रही है, L। ओके, so we can write it sin L, because angle is a dimensionless quantity and here the dimension of angle is L, so this is
इनकरेक्ट। ओके, ये इसलिए क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। नाउ लेट्स चेक द थर्ड वन इज y is equal to a upon t and sin t upon a, sin t upon a, ठीक है। डायमेंशन ऑफ LHS is L, a upon t we can calculate, but the equation will be correct if this term is a dimensionless quantity, because angle is a dimensionless quantity. So dimension of t upon a, what is t, and displacement L, so it is L1 minus t, but angle is a dimensionless quantity. एंगल डायमेंशनलेस है, बट यहाँ पर डायमेंशनलेस नहीं आ रहा है, इट मींस दिस इज आल्सो रॉन्ग। ओके, लेट्स चेक आउट द लास्ट वन। हियर फर्स्ट वी विल चेक साइन एंड कोसाइन टर्म्स। दिस इज t upon t, time upon time dimensionless, 2 pi is a constant, time upon time dimensionless, 2 pi is a constant. So here dimension of LHS is dimension of y, which is L, because dimension of displacement is L, and dimension of RHS is dimension of A, which is also L. So dimension of LHS is equal to dimension of RHS. Therefore this physical quantity is dimensionally correct. So out of 4 only 1 and 4 are correct, while 2 and 3 are incorrect. So in this way we can check any physical quantity on the dimensional ground. हम डायमेंशन को चेक करके ये बता सकते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इनकरेक्ट है। ओके, सो इस तरीके से और भी एग्जांपल्स और भी न्यूमेरिकल्स आपके एक्सरसाइज में हो, उसको ट्राई कीजिए। एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट यूनिट।